क्लास 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 5। आज क्लास हम इस लेसन 5 को रिवाइज करेंगे और मेन लाइन जो है मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ जो कि आपने प्रिपेयर करनी है अपने टेस्ट के लिए। क्लास 7 पेज नंबर 36 से हम स्टार्ट करें। सबसे ऊपर स्टार्टिंग से द वर्ड इंडस्ट्री कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंडस्ट्रिया मीनिंग बिल्डिंग अप। क्लास जो लाइन आपको मैं रीड करवा रही हूँ आप इसे अंडरलाइन भी करेंगे और ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर के लिए। Industrialization enhances the standard of living and takes human civilization towards better comforts. Type of industries. On the basis of raw material used, industries are generally categorized as mineral-based industries, agro-based industries. The industries which get their raw material from the mining sector are called mineral-based industries. These industries use minerals and fossil fuel in their manufacturing process such as iron ore, bauxite, limestone, coal, petroleum and natural gas as raw material. Some important mineral-based industries are steel plant, automobile industry, shipbuilding and aircraft industries, metallurgical industries, cement industries, fertilizer industries and petrochemical industries. Agro-based industries, the industries which get their raw material from the agriculture sector are called agro-based industries. Other important agro-based industries are sugar industry, jute and silk textile, tea, coffee, vegetable oils, rice mills, fruits and vegetable pulp and juices, jams, sauce, flour mills, spice grinding, pickle, etc. Next page 37. Large scale industries refer to those industries which require high infrastructure, large workforce and heavy capital investment. Small scale industries are those which do not require a huge infrastructure, space, workforce and investment like the large scale industries. Cottage industries can be operated from home. Raw material are the most basic and crucial need for an industry. Next page. Page number 38. Cotton textile industry requires humid climate because cotton threads break in a dry climate. It is possible to install artificial humidifiers, but they increase the cost of production. Some industries require more water like steel, chemicals, rayon, paper and thermal power. Cheap and abundant labor reduce the cost of production. Do you know? ये भी important है. Continuous power supply. Power is important for any industry. Irregular power supply can hamper production in a great way and can create a problem to complete the production on time. Government plans various policies for the welfare of its people. It provides several incentives for the development of industries as per the requirement of a reign. It may provide free or cheap land, electricity, transport, tax relief and other faculties to increase the growth of the industries. Insurance means guarantee or safeguard against loss. This is a big attraction for any industry. If there is no worry of loss, industries start growing. The iron and steel industry is the mother of all industries as it plays a critical role by meeting the needs of transport industry, development and of infrastructure, the exploration of oil and gas reserves. क्लास ये जो मेजर इंडस्ट्रीज है ना, सभी इंडस्ट्रीज
जितनी भी इंडस्ट्रीज अब हमारी नेक्स्ट है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शुगर इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जितनी भी इंडस्ट्रीज क्लास दी हुई है इनमें सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा है। ये अब आपको खुद अंडरलाइन करके बनाना है। सभी इंडस्ट्रीज़ के इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इन सभी से रिलेटेड जो है ना काफ़ी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर है। ये आपको कम्प्लीटली रीड करने हैं अच्छे से, और जो आपको मेन पॉइंट लगता है आपने उसे अंडरलाइन भी करना है ताकि वो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। क्लास 5 आज का वर्क है लेसन 5, रीड लेसन 5 एंड प्रिपेयर फॉर टेस्ट।